right? Everyone can hear me, right? Falling. Yes, Make sir. sure you have Yes, calculators, sir. okay? Yes, sir. So screen sharing is on, right? Okay. So our first question from probability and statistics, okay? Everyone there? It's from October, November 2021 and paper 42, okay? We have already been given the cumulative frequency, okay? So we have already been given the cumulative frequency diagram. It shows information about the floor area, okay? It shows information about the floor area of each of the 80 houses, okay? So there are 80 houses in total that we have, students. The cumulative frequency we can see. We have to use the diagram to estimate the median, lower quartile, interquartile range, and the number of houses with a floor area greater than 120 meters square. Okay, so we have to get the answer for 2, 3, 5 marks. Okay, so they are testing you on cumulative frequency for 5 marks. Then they are testing you on combined estimated mean that you have to find for the group data, and then they are asking you histogram to complete as well for 4 marks, and then they are asked for 3 marks a probability question as well. So that is how the questions will come in past paper. Hope everyone get an idea. 5, 9, 13, 16 marks, a total 16 marks question on the a total 16 marks question they're asking on probability and statistics. Okay, everyone got it clear? Yes, A sir. total 16 marks question. Okay, so we have to find an estimate for the median first. Okay, so median is what? As we have discussed already, sir, median is 50% of the data, right? So how many houses we are? Let's do it here. That median is basically 50% of the data. So 50% of the 80 houses that we have, we will go there and it will be 40 houses. Okay, 40 houses will be the value where you will find the median. Okay, everyone got it? Then Yes, next thing sir. will be, how will you find the value? You will go at the 40th value, 40th cumulative frequency. Make sure with your pencil and your ruler you are going to mark it. And here we go, sir. The median is what? Anyone? Between 80 and 90, what it will be, sir? 90, right? So make sure you tell the examiner the median is 90 meters square. Understood? Clear on this? Yes, sir. Any question, any doubt? Yeah. Okay. So median is done. Then again, we have a lower quartile. We have to work out the lower quartile. Okay, so what is lower quartile? Lower quartile is 25% of the data, right? Lower quartile is 25% of the data. So 25% of 80 houses is going to be, sir, 80 into 25%. We got it as 20th house. Okay, so 20th 20 houses. I'm going to go till 20 now. Follow in a different color, students. So we went to 20th houses, and here we go, we got the answer as this one. So let's just read the data. How will you work it out? As I already told you, we already know that, sir, 60 and 80 difference means that that this one is 70. And I think each box represents 2 meters square. So it will be, sir, 62, 64, 66, and we reach to 68. Got it? Clear, understood? So it Yes, will sir. be Yes, sir. 68 meter. It is going to be 68 meter. Got it, everyone clear? It was Yes, going to sir. be 68 meter as the lower quartile. 68 meter square is the lower quartile. Understood? Clear on this? Yes, Okay. sir. Okay. Yes. Then we already have learned interquartile range is what, sir? Interquartile range is upper quartile minus lower quartile range. Okay. So we have interquartile range, that is upper quartile minus lower quartile we have to do. We already have got the lower quartile. Let's find out the upper quartile quickly. Sir, upper quartile is 75% of the data. So 75% of the 80 houses will be coming as 60th house or 60 houses. Understood? And then with another color, you are going to make it that, sir, where is coming 60th house is falling, everyone? Clear? 60th house is coming here. With your ruler and pencil on the diagram, you have to do it. Okay, clear on this? Yes, sir. Sahi, okay, everyone got Yes. this? So we got the answer as 120 meters square as the upper quartile. Okay, so here we go, sir. 120 meter square is the upper quartile minus the lower quartile, that is 68 meters square. Upper quartile minus lower quartile, we got the answer as 52 meters square. Got it, everyone clear? Yes, sir. I have a Okay. question. So we got, yep, go on. For the lower quartile, won't we add 1 in it? Because the formula you gave us was
25% into n plus 1. That one. No, it's not. It's not for that. It's for the cumulative frequency. So don't apply it here. Okay. It's only 25% of the total data. Not in this case. You apply that. Okay. Data is 80 houses. Okay. Got it? Clear? Everyone, any doubt? 52 meters square is the answer here. Then we have to calculate the number of houses with a floor area greater than 120 meters square. Okay. So we already are there on the floor area 120 meters square. So students need to understand there are 60 houses, but you need to understand how you're going to give the answer this one. Okay. Everyone following? Students clear? Okay. Yes. We need to understand that at 120 meters square, students follow carefully. We need to understand that at 120 meters square, there are 60 houses are less than and equals to 60 houses are less than, because cumulative frequency tells us what? Cumulative frequency is all the graph is about less than. Okay. So 60 houses are less than or equal to 120 meters square. Okay. 60 houses are less than or equals to 120 meters square. We can read the data that it's the floor area of each of the 80 houses. So 60 houses का जो area है वो 120 मीटर स्क्वायर से बराबर है या उसके लेस देन है. ठीक है. बट क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि आपने बताना है कि what number of houses are there which have a floor area of more than 120 meters square. Okay, so we have to find out that how many houses are there which are more than 120 meters square. So these are the houses. Getting it, everyone? You have to subtract it. 80 minus 60 are the houses which have an area greater of 120 meters square. Everyone got it? So you have to do it sensibly. Okay, so 80 minus the 60 houses. So there are only 20 houses which have a floor area of greater than 120 meters square. So this is the answer, that is 20 houses. Let me know if people got it. I'll repeat it again. 60 houses तक जो है वो floor area 120 meter square है या उससे less है. They are asking you कि 120 meter square से कितने houses का area ज़्यादा है. तो 120 ये सारा part है. And this is basically how many houses? 80 minus 60. खाली 20 houses ये. There are only 20 houses which have an area of more than 120 meters square. Got it, everyone? Clear? Students? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Enough explanation is 2 marks का है, तो make sure 1 mark is for showing this and 1 mark for is the answer. Okay, you have to make sure, be careful. This is all about conceptual understanding. Okay, you need to understand a cumulative frequency किस तरह information represent कर रहा है, and we have talked about it कि how do you read the data. That is very important. Okay, clear, everyone? Move forward, right? Hello. Yes, sir. Okay, this is there. Okay, I'll send the screenshot as well. If anyone wants to take the screenshot of this page, they can quickly do it. Okay. Clear on this? Got it? Sure, no problem. Move forward. Yes, sir. Okay. Next, we have easy task. Make sure 4 marks means a lot of workings you have to show. Again, this is quick revision. Okay. So you find out you have to calculate an estimate of the mean floor. Okay, students, you have to calculate an estimate of the mean floor. So here, what I'm going to do, I'm going to take the midpoints first, as we have always talked about that whenever you have this type of question, you'll have to take the midpoints. So what is the midpoint of 40 and 60? 50 is the midpoint, right? For students who don't get it, you have to take the limits, the upper value and the lower value, class boundaries you have to take and divide it by 2, the midpoint you have to find. Okay, 40 plus 60 divided by 2 will be the answer. Okay, got it, everyone? 40 plus 60 divided by 2. Similarly, then you go again 60 and 80 and divided by 2. Okay, understood? Got it? Hello, everyone? Yes, sir. Yes, sir. So 60 plus 80 divided by 2, that will give you 70. Okay, so can we do it directly now? Solving it directly. Okay, now 80 and 900 will be 90 midpoint. 100 and 130 will be 115 midpoint. Okay, 130 and 160 will be 145 midpoint. Make sure you check. Anyone can check. And 160 and between 200 will be 180. Okay, understood? Clear? Yes, If sir. anyone doesn't get any value, okay, how did you get, sir, 145, 180 or something? So let me know now. Okay, make sure understand this, that we have to take the the midpoints of these. Okay, understood? Now what is the mean formula, sir? The mean formula is summation of fx divided by summation of frequency is equals to, first you find out summation of frequency, that we already know because ये 80 houses का data है. आप count भी कर सकते हैं students, but क्योंकि ये 80 floor area is shown,
तो आप ये जो इनको काउंट कर लें 14, 17, 18, 15, 9 and 7, what's the value coming? Okay, like everyone getting it? 14. Make sure आप एग्जामिनर को सारी वर्किंग शो कर दें, ठीक है? 14 plus 17 plus 18 plus 15. Everyone following right? Plus Yes, sir. 9 plus 7. So we got that. Okay, 14 plus, let's do the calculator now. So we got it as 80, right? So 80 houses are there. Okay, 80 houses are the total number of observations or the total number of frequency. And sir, you need to get the EFX as well, summation of frequency into X. So how do we get it? 50 multiplied by 14, okay, plus 70 multiplied by 17, plus 90 multiplied by 18, understood? Plus 115 multiplied by 15, plus 145 multiplied by 9, plus 180 multiplied by 7. Okay, all the midpoints into frequency, midpoint into frequency, summation of them, midpoint into frequency. Okay, thank you. Let's check. Anyone else can double check? One more answer I need. Anyone? 17 into 70 into 17 plus 90 into 18 plus 115 into 15 plus 145 into 9. I checked, it's the same. And then we have one more in it, that is 180 into 7. So we should be getting, students, 7,800. Okay, so it will be 7,800 divided by 80 of the houses. So here we go, 1,700 divided by 80. So we got this as 97.5 meters square is the mean, that is the average area of a house is 97 point, sorry, the average area, the mean basically means the average. So 97.5 meters square is the average. Okay, students, got it? Clear, everyone? That's how you have to show the whole working. Okay, clear, understood? Yes, And you will get the 4 Yes, sir. marks. Okay, clear on this? ठीक है? Any questions, Yes. anyone? Waiting. No, sir. ओके, फिर नेक्स्ट अगेन 4 मार्क्स के लिए आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. एज आई सेड कि अब जो है आपको वो डायग्राम्स ऑलरेडी गिवन होंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द, जस्ट मेक श्योर अंडरस्टैंड कि कितना डेटा है एंड कैसे लेना है. तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग फॉर हिस्टोग्राम दैट इज इंपॉर्टेंट? एनीवन रिमेंबर्स? It's the frequency density, right? If the class width are not same, sir, if the class width will not be same, you have to find out frequency density for all of them. Okay, if the class width is not same, you have to find out frequency density for all of them. So let's start working on this, and uh, let's start working. So we can see 40 and 60, the class width is 20, 60 and 80, the class width is 20, 80 and 100, the class width is 20, right? So first three में, the starting three में class width same है, but उसके बाद ये 30 सेंटीमीटर आ गया डिफरेंस, 30 सेंटीमीटर आ गया एंड 40 सेंटीमीटर भी डिफरेंस आ रहा है. तो एवरीवन होप गेट इट कि क्लास विथ जो है सर वो डिफरेंट आ रही है. अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है गाइस? हेलो, Yes, sir. ठीक है. तो लेट्स जस्ट ऐड अ पेज ताकि ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है. यप, बट यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? फॉलो करें, सही है? बल्कि लेट्स डू इट समवेयर एल्स. नीचे प्रोबेबिलिटी सॉल्व हो जाएगा. एक पेज ऐड कर लेते हैं ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग हो. ओके, मेक श्योर 4 मार्क्स का तो शो प्रॉपर वर्किंग्स, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम लेट्स राइट इट डाउन कि हमने ये पूरा टेबल हम कॉपी कर रहे हैं, सही है? तो व्हाट वी कैन से इज बेसिकली हियर कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है और हमारे पास जो क्लास विद है हम वो लिख रहे हैं, सही है? एवरीवन गॉट इट? क्लियर है बात? हेलो, स्टूडेंट्स गॉट Yes, इट? sir. Yes, सही है. sir. तो यहाँ पर मैं क्लास विद लिख रहा हूँ, क्लास विद, एंड यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, ठीक है? तो व्हाट इज द फर्स्ट क्लास विद? 20 20 20, 14 17 18 इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो 20 क्लास विद, 14 फ्रीक्वेंसी, और फिर 17 फ्रीक्वेंसी एंड 20 क्लास विद, ठीक है? मैं डिफरेंस निकालना, एवरीवन गॉट इट? डिफरेंस क्या होता है? क्लास विद इज बेसिकली द डिफरेंस. 60 माइनस 40, 80 माइनस 60, याद होगा राइट? 100 माइनस 80, 130 माइनस 100, Yes, ठीक है? sir. तो वी गॉट इट 20 विद फ्रीक्वेंसी, 14, 17 as 20 and 18 as 20 as well. फिर उसके बाद हमारे पास क्लास विद चेंज हो रही है, 30 30 है, और 15 और 9 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? 15 and 9 is, sorry, 15 9 फ्रीक्वेंसी और ये 30 क्लास विद है, ठीक है? बाकी दोनों की क्लास विद 30 30 है सर, और 15 is the class with 15 is the data here. Okay,
15 is the frequency, 9 is the frequency, 7 is the frequency. एंड जब 7 फ्रीक्वेंसी है तो क्लास विथ कितनी है? 200 माइनस 160, 40 का डिफरेंस आ रहा है, 40 इज द क्लास विथ देयर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? एवरीवन गॉट Yes, दिस? sir. नो Yes, sir. प्रॉब्लम, नो कंसर्न्स? ओके, बस आपने 200 माइनस 160 करा, 40 क्लास विथ आ गई। अब क्या निकालेंगे एनीवन? अब सर आप निकाल लें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ओके पीपल गॉट इट? क्या फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? फ्रीक्वेंसी सर डेंसिटी निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का एनीवन? Frequency divided by class width. Okay, so we got 14 divided by 20, that is 0.7. Okay, we'll divide 14 by 20. 17 divided by 20 is something 0.85. ठीक है जी। 18 divided by 20 is something 0.9. 15 divided by 30 is definitely 0.5. 0.5. Okay, वो तो easy है। And then 9 divided by 30 will be something 0.3, and 7 divided by 40 is something 0.175. 0.175. Thank you, very good. Those who are responding, good job. 0.7, 0.85, 0.9, 0.5, 0.3. Sir, we have got the frequency density. अब आपने इसको just plot करना है उस पेपर में, उस ग्राफ में। ठीक है, understood everyone? Yes, sir. सो ये जो है वो 0.7 ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। वी कैन सी दिस, कि आपने पहले अंडरस्टैंड करना होता है। यहाँ पर 1 से लेकर 0, 0 से लेकर 1 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। इफ यू फॉलो केयरफुली स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा कि ये 0.5 है, ये 0.6 होगा, ये 0.7 ही है, फिर ये 0.8 है, ये 0.9 एंड 1 है। तो उन्होंने दो तो ऑलरेडी करे हुए, सही है स्टूडेंट्स? उन्होंने 40 से लेकर 60 वाला करा हुआ है, एंड बिटवीन 60 एंड 80 वाला भी करा हुआ है। ठीक है, तो 40 till 60 and 60 till 80 they have already done it. Okay students, clear? So we have to Yes, sir. complete the histogram from the Yes. next, okay, and that is why we got 4 marks. अगर हम ये चारों correct draw करेंगे, shape correct होगा, तो we will be getting the 4 marks. Okay students, तो here we go. Next one क्या था कि 0.785 है, 0.9 पे click करना होगा। तो सर 0.9 पे click करते हैं, make sure pencil and ruler 0.9 something ये रहा, and it will be like this. सही है? Sorry, it will be like this कि 0.9 से लेकर आई थिंक 60, 80 से लेकर 100 है, राइट? 80 से लेकर 100 पर आप 0.9 ड्रॉ कर देंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? सही Yes, है? sir. 0.9 ये है, तो 80 से लेकर 100 तक हमने 0.9 ड्रॉ कर दिया। फिर 100 से लेकर 130 पे जाना है सर। 100 से लेकर, ये वाला भी हो गया, 100 से लेकर 130 पे 0.5 पे ड्रॉ होगा, तो समथिंग 120 ये रहा, 140 ये रहा, तो 130 इन बिटवीन होगा सर। तो 130 ये रहा और हमें 0.5 पे जाना होगा सर। अगेन रूलर लिया, पेंसिल एंड रूलर, एंड हियर यू गो, आपने इसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, स्मूथ लाइंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, गेटिंग इट? Yes, क्लियर sir. हो गई बात? अंडरस्टूड, कोई डाउट? नेक्स्ट इज No, 0.3, sir. जो कि 130 से लेकर 160 जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर, राइट? 130 से 160 जाएंगे। मेक श्योर आपकी क्लास विद इतनी ही हो। ठीक है, जो आपका वाई एक्स एक्सिस पर है वो आप सेम लें। तो 130 से आप 160 पे जाएंगे कितना? 0.3। तो 0.3 थोड़ा नीचे होगा सर डेफिनेटली, तो ये 0.4 होगा। 0.3 मस्ट बी हेयर। तो हम ये जाएंगे विद द रूलर एंड पेंसिल अगेन, कि आप Sir, 0.3 पे 160 मार्क कर देंगे। जी जी, गो ऑन। what is the scale reading? विद स्केल रीडिंग? The scale reading on the y-axis. ऑन द, इट्स दिस वन ना, कि Hmm. ये 0.5 लिखा है और ये 0 है, जिसका मतलब ईच बॉक्स रिप्रेजेंट्स, टू बॉक्सेस रिप्रेजेंट 0.1। सो 0.1, 0.2, 0.3, गॉट इट? 0.4, Okay. 0.5, 6, 0.6, 7, अंडरस्टूड? दैट्स हाउ इट गोज। ओके, ठीक है। Yes, sir. So 130 to 160, we got this as 0.3, and then 0.175 for the last one till 200. So 0.175 आप मिडिल में ड्रॉ कर देंगे समवेयर, कि सर 0.1 और 2 के दरमियान जो मिडिल में है हम वहाँ ड्रॉ कर देते हैं till 200। तो ये 0.2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, समथिंग यहाँ पर आपने यहाँ से ड्रॉ करना है। मेक श्योर कि 0.2 के करीब करीब हो, लेकिन 0.2 पर टच ना कर रहा हो। ओके स्टूडेंट्स, 0.175 का मतलब Yes, क्या sir. है? 0.175 मीन्स इट्स वेरी क्लोज टू 0.2, बट 0.2 टच नहीं कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि इफ आई जूम इन, मैंने थोड़ा सा लाइन 0.2 से नीचे रखी है। ठीक है, इतना अलाउ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर आपने, आपका जो एक फॉर्मेट बन, आपका जो एक जो आपका एक ग्राफ बनेगा वो चेक होगा, और आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाली हो, प्रॉपरली मेंशन किया, ये आपने शो करना है, इसके मार्क्स है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी शो करने के। गेटिंग इट स्टूडेंट्स? क्लियर Yes, हो गई sir. बात? हेलो? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद एज आई सेड कि ये दोनों हम सब मिला के आएंगे, तो 16 मार्क्स में 13 मार्क्स स्टार्ट्स पे हो गया, और 3 मार्क्स जो है प्रोबेबिलिटी पे हो जाएंगे। तो लेट्स डिस्कस दैट एज वेल। ओके, सो वी हैव टू ऑफ द हाउसेस,
two of the houses are picked at random. We have two of the houses that are picked at random. दो houses ले रहे हैं. हमारे total houses कितने थे anyone? 80. टोटल हाउस हमारे 80 थे. तो हम 80. दो हाउसेस ले रहे हैं सर. टोटल हाउसेस वर 80. ठीक है, उसमें से हम कोई भी दो हाउसेस लेंगे. हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है. फॉलो केयरफुली. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द हाउसेस हैज अ फ्लोर एरिया ग्रेटर देन 130 मीटर स्क्वायर एंड द अदर हैज अ फ्लोर एरिया 60 मीटर स्क्वायर और लेस. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स इन दिस. अगेन रिपीटिंग, दिस इज अक्टूबर नवंबर 2021 पेपर 42. ओके, find the probability that one of the houses has a floor area greater than 130 and the other has a floor area 60 meters square or less. ठीक है, everyone getting it? सही है. Yes, sir. ठीक है, Yes, अब sir. हमने इंफॉर्मेशन जो लेनी है कि हमने, क्योंकि वो फ्लोर एरिया ग्रेटर हो, फ्लोर एरिया लेस देन हो, तो हमने इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी. सही है, हम यहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे. हमारे पास ये इंफॉर्मेशन, हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे बिकॉज उन्होंने बताया हुआ है कि बिटवीन एरियाज कितने हैं. जस्ट क्योंकि व्हाट आई फोकस्ड ऑन एज वेल कि you should know how to read it data, right? If people remember, it means कि between 15 houses ऐसे हैं. अगर हम एक बार रीडिंग कर लें वापस for students to revise. Sir, 15 house, there are 15 houses which have a floor area of between 100 and 130 meter square, where 100 is not included and 130 meter square is included. Getting it? याद आ गया? Everyone got this? ये हमने रीडिंग की थी. Sir, there are 7 houses between the area of 160 and 200 meter square in which 160 is not included and 200 meter square is included. ठीक है, तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपने 80 हाउसेस की यहाँ से लेनी है. एवरीवन गॉट इट? पहले समझ में आ गया? पहले तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमने ये पहले नहीं करा है ऐसा क्वेश्चन. हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं फ्रॉम द ग्रुप डेटा. ओके, ग्रुप डेटा अवेलेबल टू अस. पहला स्टेप ये है कि यू अंडरस्टैंड कि आपने निकालना कहाँ से इन्फॉर्मेशन, मतलब विच इन्फॉर्मेशन यू विल लुक एट. स्टूडेंट्स, ओके, एवरीवन गेटिंग इट? विच Yes, sir. इन्फॉर्मेशन यू विल लुक एट. क्लियर हो गई बात? ओके, अब बात करते हैं कि दो हाउसेस चूज करने. ठीक है, पहला हाउस जो है वो क्या होगा, उसका फ्लोर एरिया है ग्रेटर देन 130 मीटर स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है, उसका फ्लोर एरिया क्या होगा, ग्रेटर देन 130 मीटर स्क्वायर होगा. सही है, दो हाउसेस चूज करने. तो मुझे बताएं कि 130 मीटर स्क्वायर से ऊपर कितने हाउसेस है हमारे पास. फ्लोर एरिया ग्रेटर देन 130 मीटर स्क्वायर लिखा है ना, राइट? फ्लोर एरिया ग्रेटर देन 130 मीटर स्क्वायर. तो कितने हाउसेस है जो हमारे पास ग्रेटर देन 130 मीटर के. हाउ, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली. How many houses we have which have an area greater than 130 meter square? कितने houses हैं भाई, कौन बताएगा? 16. Excellent. 9 plus 7. सर 130 से ऊपर जिनका एरिया है वो हमारे पास 16 houses हैं. फॉलो कर रहे हैं एवरीवन? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, सही है. 9 plus 7 16 हो गए. सही है, एवरीवन गॉट दिस? इसको हाईलाइट करना जरूरी है Yes. अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, ये हाईलाइट कर दिया मैंने. 9 plus 7 are the houses that have an area. तो if someone is choosing, let's say के there is person X and Y. ठीक है, person X and Y है. टू ऑफ द हाउस हमें चूज करने, person X and Y दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं, X and Y. तो अगर मैं फर्स्ट स्टूडेंट X चूज कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट X फर्स्ट चूज कर रहे हैं, तो उनके पास कितने ऑप्शंस हैं सर? आउट ऑफ द 80 हाउसेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर. सर टोटल हमारे पास 80 हाउसेज हैं. उसमें से जो स्टूडेंट एक्स है वो कोई भी 16 में से कोई भी एक हाउस चूज कर सकता है. उसके पास 16 ऑप्शंस हैं, 16 हाउसेस के ऑप्शंस हैं, क्योंकि उनका जो एरिया है वो ग्रेटर देन 130 मीटर स्क्वायर है. ठीक है, गॉट इट एवरीवन? क्लियर हो गई बात? Yes, sir. 16 Yes, into sir. 80. सही है. अब लेट्स से कि ये क्लियर हो गया. अब फॉलोइंग मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट वाई चूज करेगा. अब स्टूडेंट वाई कौन सा चूज करेगा सर? एक हाउस ऑलरेडी चूज हो चुका है. ठीक है, एक हाउस ऑलरेडी चूज कर चुके हैं. स्टूडेंट वाई कौन सा चूज करेगा? जो अदर पर्सन है and the other one will have a floor area of 60 meter square or less. आप ऊपर जाएंगे देखेंगे कि अदर जो एरिया है, अदर फ्लोर एरिया जो है वो 60 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, उससे लेस होना चाहिए. तो वो कितने स्टूडेंट्स हो गए? स्टूडेंट्स कितने हाउसेज हो गए माय बैड? जो दूसरा हाउस चूज करेंगे उसका एरिया जो है 60 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, उससे लेस होना चाहिए. तो बताएं सेकंड कितने हाउसेज 14. अवेलेबल हैं? 14 हाउसेज अवेलेबल हैं सर. एक्सीलेंट. ठीक है, तो दूसरा जो चूज होगा वो हमारे पास खाली 14 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो हम 14 जो है वो हाउसेस को लेंगे. सिंपल होगा कि जो सेकंड वाई स्टूडेंट है वो 14 हाउसेस में से चूज कर सकता है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी एक हाउस चूज हो चुका है तो उसके पास चूजिंग के लिए खाली 79 हाउसेस बचे हैं. टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम्स अब बचे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट ने एक हाउस वो लेके चला गया. फॉर एग्जाम्पल हम हाउसेस सेल कर रहे हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट एक्स को उसने जो उसको उसकी फैमिली बड़ी है तो उसने ग्रेटर एरिया वाला ले लिया होगा, 130 मीटर स्क्वायर वाला. उसको फ्लोर एरिया ज़्यादा चाहिए उसको अपने होम में.
तो वो एक स्टूडेंट लेके चला गया एक्स वाला, तो वाई के पास ऑप्शंस कितने बचे हैं? टोटल ऑप्शन 79 बचे। उसकी फैमिली स्मॉल है, तो उसने खाली 60 मीटर स्क्वायर और लेस वाला एरिया चाहिए उसको। तो हमें 14 हाउसेज अवेलेबल है उसके पास, कोई भी 14 में से चूज कर सकता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एवरीवन गॉट इट? क्लियर हो गई बात? Yes. स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, सही है। कोई डाउट? ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता, पहले समझ लें, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन यहाँ Yes, खत्म नहीं sir. होता, ठीक है। दैट्स व्हाई आई सेड कि प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका रीजन है एक्स और वाई देने का, वरना फजूल में तो मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि एक्स पहले चूज कर रहा है, वाई चूज कर रहा है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है। इसमें कुछ बताया हुआ नहीं है कि कोई भी कभी भी चूज कर सकता है। तो इट्स पॉसिबल द सेकेंड स्टूडेंट इज चूजिंग फर्स्ट एंड एक्स स्टूडेंट इज चूजिंग लेटर, ठीक है। एवरीवन गेटिंग इट? सही है। Yes, sir. पहले हम हाउस ले रहे हैं जिसका एरिया 130 मीटर स्क्वायर है, और फिर सेकंड में हम हाउस ले रहे हैं जिसका एरिया 60 मीटर स्क्वायर है। इट इज डेफिनेटली पॉसिबल सर कि पहले जो है हम हाउस ले लें जिसमें एरिया हो 60 मीटर स्क्वायर का, एंड देन वी टेक द सेकंड हाउस दैट हैव एन एरिया ग्रेटर देन 130 मीटर स्क्वायर। ये तो किसी दो स्टूडेंट्स ने चूज करा, किसी और को ऑप्शन दूंगा तो वो अपोजिट में भी चूज कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स? क्लियर है? Yes, तो sir. दैट्स वाई आप कहोगे कि सर अगर फर्स्ट टाइम चूज कर रहे हैं तो अवेलेबल उनके पास भी 14 हाउसेज हैं। हमारे पास स्टिल 14 हाउसेज ही अवेलेबल हैं फॉर द 80, फ्रॉम द 80 हाउसेज विच हैव एन एरिया ऑफ लेस देन, बट इसमें 14/80 आ जाएगा, और जब सेकंड वाला चूज करेगा उसके पास एक ऑप्शन कम होगा, तो वो 79 16/79 हो जाएगा। ऑप्शन वही रहेंगे, 14, न्यूमरेटर सेम रहेगा, जिस डिनोमिनेटर फ्लिप हो रहा है, ठीक है। गेटिंग इट एवरीवन? सही Yes, है, sir. Yeah. ठीक है। Yes, sir. और इसका दूसरा तरीका ये है कि इसको आप एक जो निकाला आपने आंसर, सेकंड वे ऑफ राइटिंग इज 3 मार्क्स सही मिलेंगे, ये 2 मार्क्स का है, और एक थर्ड मार्क जो है वो फाइनल आंसर का होगा। आप इसको टाइम्स 2 भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। दोनों को ट्राई कर लें, सेम आंसर आना चाहिए। डबल भी कर सकते हैं कि दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। ए लेवल में ऐसे ही होता है, डबल करना होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात एवरीवन? तो 28/395 आंसर आना चाहिए। प्लीज मेक श्योर सब चेक कर लें। Zero डबल point चेक zero करेंगे seven. तो हाँ, नहीं नहीं, इसको हम इसमें देंगे, बल्कि आप उसमें दे सकते हैं, डेसिमल भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप इस फॉर्म में लिखें तो बेहतर रहेगा, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें। क्लियर है बात? Yes, sir. जब फिक्स नंबर आए ना, एक हिंट ये भी, अगर प्रोबेबिलिटी आती है 0.235, बस 3 नंबर्स आए तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है ना कैलकुलेटर में, बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, तो बेहतर है कि आप फ्रैक्शन में दें, ठीक है, डेसिमल में ना दें, एग्जैक्ट आंसर देना, ये एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। Yes, sir. ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एवरीवन गॉट दिस? कोई प्रॉब्लम Yeah. Yes, किसी sir. को? कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछें। No, sir. No, sir. सही है, जरा इसको गो थ्रू कर लें, बहुत 16 मार्क्स हमने इजीली हासिल कर लिए हैं। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। Sir, यहाँ तक क्लियर हो गया जी? बोले बोले। I didn't यस, गो ऑन। understand the part 3. पार्ट 3, ये वाला प्रोबेबिलिटी, Yes. इसमें क्या समझ में नहीं आया? लेट मी नो। The X and Y thing. एक्स एंड वाई थिंग? अच्छा अच्छा, एक्स स्टूडेंट थिंग, ओके। बेसिकली वी हैव टू चूज 2 हाउसेस, ठीक है। वन ऑफ देम शुड हैव अ ग्रेटर एरिया ऑफ 130 मीटर स्क्वायर, एंड वन ऑफ देम शुड हैव एन एरिया ऑफ 60 मीटर स्क्वायर और लेस, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट के वी हैव द पॉसिबिलिटी कि पहले ये वाला हाउस चूज हो जाए, पहले दिस वी कैन अंडरस्टैंड, ये हम इमेजिन करें, ठीक है, ये हाउस 1 है, कि पहले ये वाला हाउस ले रहे हैं और फिर ये हाउस 2 ले रहे हैं, ठीक है। ये एक ऑप्शन है, ठीक है, दैट्स वाई Yes, उससे sir. ये आंसर आया, ठीक है। आंसर तो क्लियर है ना? 16/80 कैसा है, 14/79, ये तो Yes. क्लियर है, राइट? हाँ। सो ये एक ऑप्शन है, बट इफ आई एम गिविंग समवन एल्स द टास्क कि भाई आपको भी मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप भी अपना हाउस चूज कर सकते हो, तो माइट बी कि ही चूजेस द फर्स्ट, कि हाउस 1 मेरा ये होगा जिसका फ्लोर एरिया लेस देन 60 मीटर होगा और लेस, और उसका हाउस 2 फिर ये वाला होगा, ठीक है, बिकॉज एवरीवन हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, डिफरेंट चॉइसेस, राइट? गेटिंग इट? क्लियर? Yes. गॉट इट? श्योर? नो प्रॉब्लम? लो, Yes, sir. क्लियर हो गई बात? सही है, एवरीवन गॉट दिस? कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. ठीक है, मूव फॉरवर्ड करें, एक और क्वेश्चन करें। हेलो, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन, इट हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करते हैं, सही है। सो दिस इज फ्रॉम May June 2021, ओके, दिस इज फ्रॉम May June 2021, पेपर 43, ओके, सही है। लेट्स डिस्कस अगेन, ये कितने मार्क्स का है? 3 and 4 5 6 7 8 9, and again 6 marks, 15 marks का क्वेश्चन है। एंड माइंड यू,
ये जो लास्ट पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं आया, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हम करने वाले पार्ट डी में। पार्ट सी तक तो माइट बी इजी हो, डिफिकल्ट ना हो, बट ये है कि पार्ट डी इज वेरी ट्रिकी, ओके? तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सही है? क्लियर है एवरीवन फॉलोइंग? सो ये Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट है। सही है? गॉट इट? एनी क्वेश्चंस एनीवन? No, किसी sir. को डाउट है कोई? क्लियर ऑन दिस? स्टार्ट? Yes, sir. ठीक है जी। ओके, आप लोग सब रीड करें क्वेश्चन, गिव मी 1 मिनट, ओके? सब क्वेश्चन रीड करें, फाइंड आउट करें, ट्राई करें, रेंज, मोड और मीडियन ट्राई करने की कोशिश करें, ओके? कमिंग इन 1 मिनट, ओके एवरीवन? सही है? Okay, let's continue, okay? Following, everyone can hear me, right? Yes, sir. Screen sharing on and everyone can hear me, right? Yes. Yes. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी एक रिवीजन है, राइट? स्टार्टिंग पार्ट, ओके? Yes, sir. So they are telling us के we have those test scores last term. Those test scores last term were 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, okay? ठीक है? We have to find the range, sir. The first thing It's is we have to 4. find the range. Range is basically, good job. Range is basically the highest value minus the lowest value, okay? So it will be 10 minus 6, that will be 4, okay? Highest value is 10 and the lowest value is 6, okay? The first important thing is कि we need to check students, जैसे ही आपके सामने ऐसे questions आए, make sure you check it out कि ये ascending order में है डेटा या नहीं डेटा, सही है? Because it's an ungrouped data, right? तो we need to make sure कि students के ये ascending order में है या नहीं है, ठीक है? तो we got 6 here and we got 10 here. 10 is the highest value order में है, so 10 is the highest value and 6 is the lowest value. So we got the range as 4. Okay, understood? Yes, sir. Yes, sir. Next we have the mode. Mode is the most repetitive number. Mode is the most 7. repetitive number. So what is mode? We can witness that there is 7 3 times. So 7 is the mode. Okay. Got it, everyone? Clear? Yes, sir. And then we have the median as well, students. Median is what? The middle value. It's 8. Mode is most 8. repetitive number. Most repetitive number, and median is the middle value, okay? Median is the middle value, okay? Got it? Yes, So sir. what do we have as the middle value? 8. We have the middle value as this cancels out, 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 7 and 9 cancel out. So we are left with 8 as the middle value because I think the data is odd numbers, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah. We have been given 9 observations, 9 numbers, students, and we can easily work out that the median is coming in the middle value, the middle data. So we got that as 8. Okay, understood? Everyone got it? Clear? Yes, Yes. sir. Okay. Just again the similar type of question. We have been given the data. Now the data is changed. Okay. 3 marks, we already got it easily. Okay. So some parts you have to spend less time. Okay. The reason they have given you first part easy because of the last part. Okay. Understood?
The cumulative frequency diagram shows information about the time taken by each of the 200 students to solve a problem. Okay, so the total data is not what total data is what here, students? So the total data is 200 students. Got it, everyone? The total data is what? 200 Yes. 200 students. Clear? Yes, We sir. have to find the median and we have to find the interquartile range. Okay, we have to find the median and we have to find the interquartile range. So median is, sir, the same thing. 50% of the data, we have 200 students. 50%, half of it will be the 100 students. So you go there and you find out what is the value for the 10. 100 students data. Okay, so here we go. This is exactly matching at 14 minutes is the median. Okay, that 14 minutes is the median value. 14 minutes is the median for the 200 students who have taken the time to solve a problem. Okay, they are solving a puzzle or a problem. Okay, make sure data, you should know what's the data all about. The data is about 200 students taking the time, how much time they are taking to solve a problem. We can make it simplification. They are solving maths problem. They are solving the maths question or any puzzle. Okay, got it? Her student कितना time लिया 200 students में से. Okay, got it, everyone? Yes, So sir. फिर interquartile range क्या हो जाएगी? Again the same thing. Upper quartile minus 4. the lower quartile, sir. Yes. Upper quartile minus the lower quartile. So we have 75% minus 25%. So here we go. We will say that, sir, 75% of the data of 200 is what? 150 students, and 25% of the data of 200 students is 50 students. Got it? Clear? So these are the values that you have to go and look it out. Okay. Any questions? Anyone got it? So here we go. 150 is in between. 150 is in between here. So 150 is giving me this value. Students got it? Clear? No problem. No problem. Yes, sir. So we got this as this one, and 50 students are this one. So we got this as this one. Here we go. So now we have to define of both of them. Okay. So I believe the lower quartile is between 10 and 11. So we can call this as 11, between 10 and 12. So we can call this as 11 because exactly between our 10 or 12 ke between mein, so we can say that the lower quartile is 11 minutes and the upper quartile is coming as 14 and 6 to 15 keh sakte hain, because it is coming in between, right? 4. So we can say 15 minus 11, It's 4 4. minutes is the interquartile range. Okay, so 4 minutes is the interquartile range and 14 minutes is the median. Okay, 14 minutes and 4 minutes is the interquartile range. Got it, everyone? Clear? Understood? No Yes, problem, sir. no questions? Yes. Okay, this first page is done. Okay, you got 3, 5, 6 marks already. You got it out of 15 marks. So 9 marks we have to get in the next page. Yes, get me now. Everyone got this? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Clear? Move forward, right? Again, we have to calculate the mean for 3 marks. Okay. So again, this is a different type of mean. Okay. So eventually in the both the questions, it's a summary of how do we solve cumulative frequency, histogram, something about probability as well, plus ungrouped data, group data, different types of data we have revised. Okay. Understood, everyone? And a new learning that is coming in part D. Okay. Understood? Clear? Yes, Yes, sir. sir. Hello. Okay. Sir. The test scores of 200 students. The test scores of 200 students are shown in the table. And what we have is the test scores are shown. So how do you read this data? First thing is important. A lot of students will be confused in how to read this data. So you have to say that there are, sir, 48 students who have scored 9 in the test. Okay. 9 in the puzzle or 9 in the maths problem. Okay. There are 10 students who have scored 6 marks. Okay. There are 21 students who have scored all 10, but all that their score is 10 each. Okay. Everyone getting it? Everyone got it? How do you read this data? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just give me 1 minute. Okay.
I got the Yes, answer. got it? Okay. So how do you find the mean? Okay. Double check it. Okay. So in this way, mean will be, again, you Okay. need the summation of frequency, that is 3 plus 10 plus 43 plus 75 plus 48. Make sure show 200. all the workings, although we already know that this is going to be equals to what students? 200 students. Okay, question पीछे से continue है. Okay, if the question is being continued from the behind, from the previous part, you need to understand that 200 students होंगे. The summation of frequency is again 200 students. We have to find the mean for them. We'll have to find the summation of frequency into x again. And this time it will be, because there is no group data, continuous data, just multiply discrete values. 5 into 3 plus 6 into 10. Okay, everyone getting it? You have to multiply both the scores, the frequency. Okay, this is frequency. This is the value of x. F into x you have to do. Everyone getting it? X into f you have Yes, to sir. multiply, and this sign says that this is summation, sum of, this is a statistics language. Okay, stats language. Okay, got it? So 8 into 75 plus 9 into 48 plus 10 1680. into 21. Okay, I'll check as well, and everyone else can check as well. 15 plus 60 plus we got 7 into 43 plus 8 into 75 plus 9 into 48 plus 210. 1618, right? 1618. Yes. Okay, Yes, sir. so here we go. It will be 1618 divided by 200 students. Okay, 8.09. so we got that as 8.09 as the mean. That is the average score that each student got is 8.09. Okay, understood? Getting it? Yes, And sir. you can see Yes, as sir. well कि यहाँ पर ज़्यादा डेटा है. यहाँ पर ज़्यादा डेटा है, तो which means कि normally students ने 8 score कर लिया था. ठीक है? Understood? Should we move forward? Clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Now coming to the most tricky part of this question. Okay, that's why I wanted to do this question. Understand? ठीक है? Question tricky nahi hai, but you need to understand that we haven't done this before and it's not being tested as well much of the time. Okay, तो और recent paper है तो test हो सकता है. ठीक है? And it's a very important learning. Usually they test this in the A levels. Okay, उसमें आता है जरूर. The height in centimeter each of the 200 plants is measured. Okay, तो ये जो हाइट है वो 200 प्लांट्स की, अब ये कंप्लीटली क्वेश्चन चेंज हो गया. ठीक है, स्टूडेंट्स वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया. पार्ट डी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन. सब फॉलो कर रहे हैं एवरीवन? Everyone is there with me? Hello guys. Yes, sir. Yes, sir. Everyone getting it? Students वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया. कंप्लीट 6 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स है ह्यूज मार्क्स. ठीक है, के 6 मार्क्स के लिए वी हैव टू डू 200 प्लांट्स इज मेजर्ड द हाइट इन सेंटीमीटर, द हिस्टोग्राम इज शोन. तो सर हिस्टोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी गिवन है, हाइट ऑफ द प्लांट्स आर देयर. यू मस्ट शो ऑल योर वर्किंग्स. वी हैव टू कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन हाइट. इसका मीन निकालना हिस्टोग्राम का है. और हमें कोई डेटा नहीं गिवन, हमें डायग्राम ऑलरेडी बना के दी है. एवरीवन गेटिंग इट? द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन. Yes, sir. हमें इस तरह का डेटा नहीं गिवन स्टूडेंट्स, हमें इस तरह का डेटा भी नहीं गिवन है. एवरीवन गेटिंग इट? जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, Yes, sir. डायरेक्ट उन्होंने हमें लास्ट स्टेप दे दिए. एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे करते हैं. लास्ट क्वेश्चन हमने कैसे किया था कि सर हिस्टोग्राम की इंफॉर्मेशन गिवन थी, हमने उसको यूज करा, क्लास विद निकाली, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाली, फिर ड्रॉ कर दिया. राइट? अगर एक बार आप इस गो थ्रू करें, इसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स. क्या करा? हाफ डायग्राम ड्रॉ थी, हमने डायग्राम कंप्लीट करनी थी. हमने वी टॉक आउट द क्लास विद, सर क्लास विद निकाली, फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाली और फिर इसको प्लॉट कर दिया. राइट? ठीक है, Yes, एवरीवन sir. गेटिंग इट? अब क्या करना है सर? आंसर ही गिवन है, फाइनल आंसर गिवन है, हिस्टोग्राम ऑलरेडी ड्रॉन है आपके सामने, आपने मीन निकालना है. विच मीन्स पहले अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, फिर सॉल्विंग तो हो ही जाती है. कि इस हिस्टोग्राम को यूज करते हुए बैक ट्रैक करते हुए पीछे जाना है, सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करनी है, कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है, कितनी इसकी क्लास विद है, और फिर हम उससे अपना मीन निकालेंगे जैसे हम नॉर्मली मीन निकालते हैं. एवरीवन गेटिंग इट? क्लियर है बात? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब आ जाए, फॉलो करते हैं. सही है, पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पर पहले क्या होगा, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था सर? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विद. ठीक है स्टूडेंट्स, सही है, यही फॉर्मूला याद रहेगा. सही है. Yes. अब आपके Yes, पास क्या sir. गिवन है सर? हमारे पास दिस टाइम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी गिवन है, और क्लास विद भी हम वर्कआउट कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द ग्राफ. क्या अवेलेबल नहीं है एवरीवन? क्या अवेलेबल नहीं है? तो 2 Frequency. मार्क्स हैं कि हम पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे सबकी. 2 और 2, 1 और 2 मार्क्स तो होंगे मिनिमम. हम सबकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे पहले. एवरीवन देयर विथ मी? सब फॉलो कर Yes, रहे sir. हैं?
Yes, आपने sir. 100% टेबल बनाएगा, वरना वर्किंग अच्छी नहीं होगी और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। टेबल आप ड्रॉ कर लें, बेहतर है। आपने पेंसिल रूलर से ड्रॉ करना है। ज़्यादा बड़ा टेबल बना दिया मैंने, सॉरी, बट कर लेते हैं, ठीक है। फॉलो करें। Yes, यहाँ sir. पर हम लिख रहे हैं प्लांट्स, ये है फ्रीक्वेंसी। मेक श्योर कोई कॉपी ना करे, सही है, सब फॉलो करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको। फ्रीक्वेंसी और हाइट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, क्लियर हो गई बात। हाइट ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स है ना, प्लांट्स की हाइट है, राइट। 200 प्लांट्स आर मेजर्ड हाइट इन द सेंटीमीटर, ठीक है, गॉट इट एवरीवन, Yes, क्लियर है। sir. Yes, sir. 1 2 3 4 5, 5 बनेंगे, सही है। तो 1 2 3 4 एंड 5, सही है। फॉलो करें। पहला क्या होगा सर? पहला हो जाएगा 50 मीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर से लेकर, इसको एक्स बोल देते हैं, ठीक है। 50, द हाइट ऑफ द प्लांट्स बिटवीन 50 टू 80, द हाइट ऑफ द प्लांट बिटवीन 52 एंड 80 सेंटीमीटर, वेयर 50 इज नॉट इंक्लूडेड, या इंक्लूड कर भी ले, मसला नहीं है। 80 इज इंक्लूडेड, तो वो कितनी है? हाइट ऑफ द प्लांट्स 50 से 80, पहला बॉक्स है ना, लेट मी शेड एज वेल, ओके। एक समझ लें, एक या दो समझ लेंगे तो सारा कर लेंगे आप फिर, ठीक है। ये पहला मैंने येलो से शेड कर दिया, एवरीवन गेटिंग इट। Yes, Between sir. 52 and 80 students, what we have is 30 is the class width, frequency density is 1. Follow कर रहे हैं? Yes, sir. Frequency Yes, sir. density is 1. सर मैंने frequency density रखा 1 यहाँ पर। क्लास विथ मुझे पता है 50 से 80 कितनी हो जाएगी, क्लास विथ 30, तो फ्रीक्वेंसी आ गई सर। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि फ्रीक्वेंसी इज 30 सर, गॉट इट। पहले वाले बॉक्स की फ्रीक्वेंसी आ गई, एवरीवन गेटिंग इट। Yes, बिटवीन sir. 50 से 80 फाइंड Yes. करा, सही है। एक और करता हूँ फिर सॉल्व, देखें समझ में आता है। 80 till 100, where 80 is not inclusive but 100 is inclusive, 80 से 100 नेक्स्ट है। इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 3.5। सब फॉलो कर रहे हैं? Yes, sir. दिस इज सर 3.5, फॉलो करें इस कलर में। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3.5 मल्टीप्लाई बाय द क्लास विथ, सर क्लास विथ कितनी है? 80 से 20 की क्लास विथ 20 हो गई। 70. 3.5 इंटू 20, वी गॉट दैट एज 70 एज द फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी है सर 70। इसको भी शेड करते हैं, सेकंड बॉक्स हो गया, ग्रीन कलर में फॉलो कर लें, ठीक है। या मैं वेट कर रहा, आई नीड एवरीवन टू रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. Yes. 80 till 100 हो गया, फ्रीक्वेंसी 70। 100 till 110 हो जाएगा, वी गॉट इट एज 100 till 110 इज बेसिकली 10 10 यूनिट्स एज द क्लास विथ, ठीक है। गेटिंग इट एवरीवन, 10 यूनिट्स इज द क्लास विथ, और इसकी जो डेंसिटी है वो 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। 40. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 4 एंड क्लास विथ इज 10, तो सर ये हो गया 40 इज द आंसर फॉर दिस वन, गॉट इट। Yes, sir. क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट 2 आर लेफ्ट, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। एक पर्पल में कर लेते हैं। 110 till 120 again sir, class with student, and what we have frequency as 1 above 3.5, so 3.6 is the frequency, okay, density, frequency density. So sir, here we go, 3.6 into class with is 10 again, 36. so 36 आ जाएगा, तो 36 as the frequency, and 110 where 110 is not included and 120 is included, तो ये हमारा एक और इंटरवल हो गया, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू, गॉट इट। Yes, sir. नेक्स्ट वी हैव इज 120 टू 160, ये भी लिख देते हैं, 120 टू 160, ठीक है। और फिर हमने इसको जो है वो वर्कआउट भी कर लिया। इसका जो है वो समथिंग 0.5 से ऊपर जा रहा है, 0.5 से 0.6 इसको कह देंगे। सो हियर वी गो, ये 0.6 है, तो द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 60. इज 0.6 into 40, okay, because the class width is 120 160 का 24. डिफरेंस कितना होता है, so 0.6 into 24, and we will get the answer as 0.6 into 40, my bad, is 24, okay.
Yes, sir. Yes. Okay, so here we go. We got the frequency and height. तो आपके ऑलमोस्ट 3 मार्क्स इसी के होंगे, 3 to 4 मार्क्स, हाफ मार्क्स, एंड देन एवरी स्टूडेंट नोज कि व्हाट क्या करना है. सर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी तो पता है ऑलरेडी कि हमारे पास 200 प्लांट्स है, ठीक है. तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 200 प्लांट्स. और अगर आपने सही तरह इसको वर्क कर लिया है तो ये 200 प्लांट्स है, और पहले आप फिर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे फॉलोइंग एवरीवन, और आप इसका फिर मीन निकाल सकते हैं, तभी आपको जाके 6 मार्क्स मिल जाएंगे. 50 और 80 का मिड पॉइंट क्या होगा? 65, राइट. 80 और 100 का 90, 110 का और 100 का 105, 115, और यहाँ हो जाएगा 140. चेक कर लें मिड पॉइंट्स, ठीक है. मिड पॉइंट्स चेक कर लें काइंडली. So we got this. So 65 into 30, frequency into the midpoint, 90 into 70, frequency into midpoint, frequency into midpoint, and frequency into midpoint. So someone needs to mute 19,950. themselves. 115, 36, and 140 into 24. And here we go as the answer. We got it, the summation of frequency. Okay, someone needs to mute them. 19,950. So we got it, 19,950 divided by 200 plants, and we will get the answer, which is coming something 99.75. And is it the correct mean height? It is absolutely the correct mean height. We have completed it, and that's the correct answer as well. Okay, hope everyone got this. Yes, sir. Yes. That's how you're going to do to get all the 6 marks. Okay, so it's not difficult, it's just a long working. Make sure you take a screenshot of this. We'll continue from here in the next class. Got it? Done. Yes, This sir. screenshot as well, you can Yes, quickly sir. take, send it on the group. Yes, sir. Okay, done. The other one I'll share.